Hello students, we're going to learn about Newton laws of motion. As we all know that there are three laws basically. Okay, so starting with the first law, I'll try to explain it to you in a very easy method. So the first law will be like a body. Okay, if we take an example of a body will stay in motion. Okay, suppose that if it's basically moving, okay, moving here, it won't stop unless there is an external force provided. Okay, there is an external force provided. All right, so like I'm trying to explain it in Hindi as well. अगर कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है और ये मूव कर रही है पहले से, ठीक है, तो ये बॉडी कभी भी रुकेगी नहीं अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड किया जाए. ठीक है, अगर ये बॉडी रेस्ट में है पहले से, सपोज इट, ये केस हो गया तुम्हारा, केस हो गया 1 और ये केस आपका हो गया 2. ठीक है, केस हो गया आपका 2 और ये बॉडी जो है ये पहले से रेस्ट में है, तो ये मूव नहीं करेगी अनलेस एंड अनटिल इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स दिया जाए. ठीक है, तो इसका मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ कि पहला केस ऐसा है जिसमें अगर बॉडी पहले से मूव कर रही है तो वो रुकेगी नहीं अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड किया जाए. अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा तब होता है अगर हम नॉर्मली जो हम देखते हैं, जो हम सरफेस पर अगर किसी बॉडी को हमने छोड़ दिया तो वो काफी कुछ टाइम जाकर के बाद में रुक जाती है. दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विच इज प्रोवाइडेड बाय द ग्राउंड. फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, सो वी हैव लाइक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट एज वेल. हमारे पास फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, सपोज दैट म्यू की वैल्यू होती है 0.1 0.2 अकॉर्डिंग डिपेंडिंग ऑन द सरफेस. सो फोर्स जो होता है फ्रिक्शन का वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, जिसकी वजह से ये बॉडी रुक जाती है. बट अगर ये फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल ना हो या वहाँ पे ना हो, जैसे हम बात करें वैक्यूम में, तो वैक्यूम में ऐसा होता है कि लाइक अगर बॉडी मूव करना शुरू कर दी तो इट विल गो और वो स्टॉप नहीं होगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड नहीं किया जाए. ठीक है, आई थिंक दिस इज नॉट क्लियर, सो आई राइट इट हियर. एक्सटर्नल फोर्स ना प्रोवाइड किया जाए. ठीक है, सो यू कैन राइट इट ऑन योर ओन वे, इन योर ओन वे. सो इट्स लाइक फिल टॉक अबाउट केस 2. ठीक है, सो केस 2 में अगर बॉडी पहले से रखी है और ये मूव नहीं कर रही है, तो अनलेस एंड अनटिल हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं तब तक ये बॉडी मूव नहीं करेगी. सो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, द फर्स्ट लॉ इज दिस. नाउ वी आर कमिंग टू बेसिकली सेकेंड लॉ. ओके, सो कमिंग टू सेकेंड लॉ. So second law is basically, in terms of physics, we say that the rate of change of momentum with the respect to time is basically mass of the object into acceleration. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि बॉडी का मान लो मोमेंटम जो है वो लाइक बॉडी का जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है. ठीक है, तो लाइक इसको हम थोड़ा सा प्रूफ भी कर सकते हैं. लाइक अगर तुम P को देखो तो P इज इक्वल टू M इंटू वी, वेयर M इज मास and v is velocity. Okay, so v is velocity, m is mass. All right, so what we have to see is basically we'll do this here. So delta represents change. Okay, so what is this change? Okay, suppose that a body is moving with mass m and is moving with v1 and finally goes to v2. Okay, so this is the initial velocity, and this is final. Okay, so we can write this value delta p can be written as m of v2 minus v1. We can write this, mv is basically p, so p is equal to mv यहाँ लिखा था हमने, यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया. p is equal to mv2 minus mv1. so m को कॉमन ले लिया तो v2 minus v1 अपॉन हमने क्या बोला, डेल्टा t. so if we मतलब if we see that carefully, that v2 minus v1 upon t is nothing but change in velocity with respect to time, which is basically acceleration. Okay, so we can say that this is basically the product of mass into acceleration, which is nothing but force. So we can say the rate of change of momentum, rate is because कि यहाँ पे time present है, तो rate of change of momentum is equal to mass into acceleration, which is nothing but the force applied.
So we can say that the rate of change of momentum with respect to time is equal to mass into acceleration, which is here acceleration, that is equal to force. So second law of motion describes the rate of change of momentum will give the amount of force which is provided. Okay, so second law is done. Okay, so now coming to the third law. इसको थोड़ा रब कर लेते हैं. थर्ड लॉ पे आओ. ओके, चेंज इट टू 3. So third is nothing but, okay, third is nothing but like every action of force has a basically equal and opposite reaction. What does that mean? See, we are standing on a ground. Okay, हम ground पे खड़े हैं, हमारे बॉडी का वेट है, हमारे पास बॉडी का मास है, सपोज दैट मास इज 70 kgs, and we have the value of gravity we take around the gravity. Acceleration due to gravity is 10 meter per second square. Okay, so this gives the value m into g gives 700 of Newton force, which we are applying to the earth, to the mother earth. 700 Newton, our weight is applying this amount of force. Okay, so what happens, the ground itself provides 700 Newton to our body to basically balance us. Okay, so we are providing 700 Newton down there, and 700 Newton the earth is applying to us. So we are experiencing net force is equal to 0. That's why we are stable. We are in equilibrium. All right, so this is basically the third law. I hope you guys got it clearly, and thank you for watching the video.